Now we will discuss about our next one concept of chapter number 8, the behavior of fixed cost, variable cost and total cost, as well as which are the shapes of the TC curve which can be represented through the aggregates of the fixed cost curve and the variable cost curve. So simply here we know very well कि as we have already studied about कि fixed cost क्या होता है और variable cost क्या होता है. As well as we also know about it that the summation of the fixed cost and the variable cost is equivalent to the total cost, right? So here simply we will discuss now about the concept of the shape of the total cost curve, which is ultimately show the aggregation or the aggregate of the fixed cost and the variable cost. तो जनरली जो बिहेवियर होता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, उसका जो समीशन होता है दैट विल डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट, और जो उसकी शेप आएगी दैट विल आल्सो बी द एग्रीगेट ऑफ द फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट, एंड विच कैन बी explained with the help of this table as well as the diagram also. So we know very well this is the output which is increasing one by one unit, and fixed cost refers to which do not change with the changing level of output. Variable cost which changes as per the changing level of आउटपुट. हमने इसका बिहेवियर भी स्टडी किया था कि इनिशियली ये कैसे इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट पे, फिर ये कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करती है और उसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करती है, राइट? So the total cost is the summation of the fixed cost and the variable cost. Total of the fixed and the variable cost will be equivalent to the total cost. 10 plus 0, 10, 10 plus 10, 20, 10 plus 18, 28, 10 plus 24, 34, 10 plus 28, 38, 10 plus 32, 42, and then 10 plus 38, 48. We can observe very easily कि हमारा जो टोटल कॉस्ट का बिहेवियर है दैट इज मेनली डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड तो फिक्स्ड ही है, वो हर एक लेवल पे फिक्स्ड ही एडिशन हो गया. तो जो हमारा बिहेवियर आया टोटल कॉस्ट का दैट इज मेनली डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट. तो ये भी क्या करेगा, इनिशियली इट विल इंक्रीजेज एट ए डिक्रीजिंग रेट, दैट एट ए कांस्टेंट रेट, एंड देन एट ए decreasing rate. So similarly we can say as per the shape of the fixed cost and the variable cost, this is our output, this is our TC, TVC and TFC. We know very well कि हमारी fixed cost क्या है, constant है, no changes are there. हमारा variable cost कैसे behave करता है, like increasing, and then initially it is behaving at the increases at a decreasing rate, then increases at a increasing rate, right? So total cost क्योंकि हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल का दोनों का समीशन है, तो ये हमारे जीरो के पॉइंट से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर एक कंपनी 0 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर रही है तो फिक्स कॉस्ट तो उसको बियर करना ही पड़ेगा. सो इट विल सिमिलरली इट विल गोज इन द पैरेलल शेप, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो पॉइंट, एंड द वेरिएबल कॉस्ट started from the 0 point, and variable cost started from the 0 point, and total cost started from the uh, upper point. It means from the fixed cost, because of the fixed cost will always be there. अगर एक कंपनी 0 यूनिट भी प्रोड्यूस करे तब भी उसको 10 रुपीज की तो स्पेंडिंग बियर करनी ही करनी पड़ेगी. सो हियर वी कैन से दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट बिहेवियर एंड दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट बिहेवियर, increasing at a decreasing rate, then increasing at a increasing rate, and total cost will started from the 10 and will behave in the parallel sense of the variable cost. After that we will discuss about the next one form of the cost, which is the average cost and the shape of the average cost. Average refers to the per unit. As per the name indication, the cost per unit of output is called the
एवरेज कोस्ट, कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट की कोस्ट में हम क्या बोलेंगे, एवरेज कोस्ट, राइट. सो एवरेज कोस्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग टोटल कोस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, where the AC is the average cost, TC is the total cost and Q is the quantity. तो जैसे कि suppose हमारी total cost 6 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की कितनी है, 48, तो एवरेज कोस्ट कितनी आ जाएगी, 48 by 6 will be equivalent to the 8. It means per unit cost of output produced will be known as the average cost, which is also called as the unit cost of production. As like we can calculate it like this. Like this is our units to be produced, this is the total cost, and total cost will be divided by number of units to be produced. This is the average cost. Simply if you will divide the total cost with the help of number of units to be produced, it will be known as the average cost. And average cost is also equivalent to the average fixed cost and average variable cost. AC is equal to AFC plus ABC, where AC is average cost, AFC is average fixed cost, and ABC is the average variable cost. Average cost is the sum total of average fixed cost and average variable cost. After that, the second one form, which is the marginal cost. Marginal cost and the shape of the marginal cost. So marginal cost क्या होता है? As I already told you, marginal refers to the change. तो marginal cost क्या माना जाएगा? Change in the total cost due to which reason? When there is a additional production. कि अगर टोटल प्रोडक्शन में कुछ चेंज आता है, additional unit of the output will be produced, then marginal cost will be termed as the change in the total cost. It refers to the addition to the total cost due to the addition of one unit of output. MC of an item, TC of an item minus TC of n minus one item, or we can also say change in total cost due to the change in quantity produced. And what is the shape of the marginal cost? Simply we can also measure it with the help of like this table. See this is the output, this is our fixed cost, this is the total variable cost, and when we add both of these, this is the total cost. And marginal cost कैसे आएगी, जो change आएगा हमारा total cost में. Here the 20 minus 10 will be 10, 28 minus 20, 8, 34 minus 28, 6, 38 minus 34, 4, 42 minus 38, 4, 48 minus 42, 6, 56 minus 48, 8, and 72 minus 56, it is 16. So if there will be any changes in the total cost due to the additional unit to be produced, that will be known as the marginal cost. Now the question arises, what is the shape of the marginal cost? Marginal cost is always in the shape of U, like this. This is the marginal cost. ये कैसे बिहेव करती है, दिस इज जैसे जैसे आउटपुट इनिशियली ये डिक्रीज होती है, फिर एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाती है, और फिर अभी अगर आउटपुट बढ़ाओ आप, देन इट गोज इंक्रीजेस. दिस इज द बिहेवियर ऑफ द marginal cost. After that, what is the relationship between the average, marginal and total cost? There is also the relation कि एवरेज अगर कुछ बिहेव कर रहा है, मार्जिनल अगर कुछ बिहेव कर रहा है, या टोटल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ऑल दीज थ्री टर्म्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये कोस्ट एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है. तो हमें यहाँ पर मेनली क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट हैव टू डिस्कस द टू रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. The relation between average cost and marginal cost, and the relation between total cost and marginal cost. कि एक तो हम किस किस में रिलेशन डिस्कस करेंगे, एवरेज और मार्जिनल में, और एक हम किस किस में रिलेशन डिस्कस करेंगे, टोटल और मार्जिनल में. सो सिंपली हियर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कोस्ट एंड marginal cost? Firstly, we will discuss about the relationship between average and marginal cost. This is the unit to be produced, this is the total cost. इसकी हेल्प से हमने एवरेज निकाला. एवरेज कैसे निकाला, टोटल कोस्ट को जब आपने यूनिट से डिवाइड किया. मार्जिनल कैसे निकाला, प्रीवियस वन में से नेक्स्ट वन को
लेस किया. ओके, सो व्हाट इज द नाउ वी कैन से दैट द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ दीज कोस्ट. जब भी कभी आपको किसी चीज के बारे में रिलेशन शो करना है, देन फर्स्टली यू जस्ट हैव टू टेल द meaning of both of that concept, then the formula to calculate both of that concept, then the table is there, now the diagram is there, and after that we will conclude about the relationship among them. This is the average cost and this is the marginal cost, right? देखो जब ये डिक्रीज हो रहे हैं, average cost is also decreasing, marginal is also decreasing, but marginal is falling at a high rate than the average, right? अब जब ये इंक्रीज हो रहे हैं, एवरेज इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल भी इंक्रीज हो रहा है, तो मार्जिनल क्या कर रहा है? स्टिल द मार्जिनल रेट इज इंक्रीजिंग एट ए हाई रेट. तो दोनों ही उसमें सिचुएशन में देखो आप कि हमेशा क्या हो रहा है, जो भी बिहेवियर चल रहा है, चाहे वो इंक्रीजिंग का है चाहे वो डिक्रीजिंग का है, एमसी इज ऑलवेज बिहेविंग इन ए फास्ट मोड. जब एसी फॉल कर रहा है तो एमसी भी फॉल कर रहा है, बट वो एसी से कम है. एसी राइज कर रहा है, एमसी भी राइज कर रहा है, बट वो एसी से ज्यादा राइज कर रहा है, राइट? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब एसी कांस्टेंट है एट द पॉइंट ऑफ ई, तो एमसी और एसी एक दूसरे के बराबर है. एमसी इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ एसी एंड कट एसी एट इट्स लोएस्ट पॉइंट. कि एमसी जो एसी के पॉइंट को कट कर रहा है वो कब कर रहा है? एसी के लोएस्ट पॉइंट से कट कर रहा है. ओके, सो द सिंपली थिंग इज देयर, विच एवर द बिहेवियर विल बी there, then we can say that MC is behaving in a higher speed. कि जब AC fall हो रहा है MC भी fall हो रहा है, but at a high speed of than AC. When AC rises MC is also rises but greater than AC. MC उसको AC के किस पॉइंट पे कट कर रहा है? At its lowest point. Okay, so here at the point where the AC is at its lowest level, उस पॉइंट पे MC उसे कट ऑफ कर रहा है. Now the next one is there, what is the relationship among the total cost and the marginal cost. तो सबसे पहले आप दोनों का फॉर्मूला दोनों की डेफिनेशन बताएंगे, total cost and the marginal cost. After that you will have to define the formula of total cost and marginal cost. Marginal is estimated as the difference between total cost of the two successive unit, MC of n, TC of n, TC of n minus 1. अब यहाँ पर क्या आता है कि जब, नो डाउट, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, टोटल कॉस्ट हमेशा कैसे बिहेवियर करेगा? जिस रेट से बिहेवियर करेगा एमसी उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करेगा. इट मींस इफ द टीसी, देखो कॉस्ट हमेशा इंक्रीज होगी, वो कभी रिड्यूस नहीं होगी. इफ टीसी इज इंक्रीजिंग एट ए रिड्यूसिंग रेट, तो इट मींस एमसी जो है वो रिड्यूस कर रहा है. इफ टीसी इज इंक्रीजिंग एट ए इंक्रीजिंग रेट, इट मींस एमसी इंक्रीज कर रहा है. सिर्फ रेट पे ध्यान दो, जिस रेट पे टीसी बिहेव करेगा एमसी एक्चुअल में वही बिहेव करेगा. अब क्या आ जाता है, जब एमसी अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे आ गया कि उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो टीसी क्या करता है? इट जस्ट स्टॉप इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट. वो उसके बाद बढ़ती हुई रेट पे बढ़ना शुरू कर देता है, बिकॉज ऑफ द एमसी इज द रेट ऑफ चेंज इन द टोटल कॉस्ट. कि टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आएंगे दैट विल डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट. सो हेयर वी कैन सी वेरी वेल, दिस इज द एक्चुअल बिहेवियर or the relationship between the total cost and the marginal cost. This is x-axis, this is y-axis. Output, total cost. This is y-axis, this is x-axis. Output, marginal cost. This is the MC and this is the total cost. Up to this point, जब तक ये total cost जो है वो decreasing rate पे increase हो रहा है, it means हमारा MC जो है decrease हो रहा है. जिस पॉइंट पे उसने स्टॉप कर दिया एमसी हमारा लोएस्ट पॉइंट पे है. आफ्टर दैट एमसी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, राइट? तो टोटल कॉस्ट कैसे इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीजिंग रेट पे. ओके, सो दिस इज द सिंपल रिलेशनशिप अमंग द marginal cost and the total cost.